हाय फ्रेंड्स, आज हमने मेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेट्रोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अर्थ साइंस दे रहे हैं, जो नेट दे रहे हैं। ओके, CSR का। ओके, जो अर्थ साइंस का पेपर जो है, जो जियोग्राफी, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी, ओके, ओशन मेरीन साइंस और अदर सम टॉपिक्स जो आते हैं, जियोकेमिस्ट्री। ओके, तो वहाँ से वो जो दे रहा है, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अब सब टॉपिक को नहीं पढ़ना है, आपको स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं अर्थ साइंस के अंदर। ठीक है, तो उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। लाइक मेट्रोलॉजी आप पढ़ सकते हैं, ओशनोग्राफी और मेरीन साइंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल है। और जो टॉपिक है लाइक जियोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं। जियोफिजिक्स थोड़ा सा टफ है, लेकिन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मेट्रोलॉजी, सब मेट्रोलॉजी इस बुक पढ़ रहे हैं, 3rd एडिशन का। ओके, ये बुक दिया है मेट्रोलॉजी का ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। ओके, स्टडी मेट्रोलॉजी स्टडी किया करते हैं एटमॉस्फेयर एंड इट्स फिनोमेना को। द टर्म इटसेल्फ गोज बैक टू द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल 340 BC। उन्होंने राइट ए बुक नेचुरल फिलोसफी एंटाइटल मेट्रोलॉजी का। ओके, रिप्रेजेंट किया करते हैं सम ऑफ नॉलेज ऑन वेदर एंड क्लाइमेट, द टाइम्स, एज वेल एज मेट्रोलॉजी ऑन एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, ओके, एंड केमिस्ट्री। Some of the topics covered included clouds, rains, winds, hails, thunder, okay, hurricane. In these days, substances that fill the sky and anything hence here describe. Okay, explain atmospheric phenomena in philosophical and specular mode में। okay, ये बात देख सकते हैं। Blaise Pascal and rain using a barometer demonstrate atmospheric pressure. Okay, increasing altitude. Okay, 1667. 1719 German physicist Gabriel Daniel working on the boiling of the freezing of water। इसके बारे में उन्होंने काम किया। डेवलपमेंट टेम्परेचर स्केल 1735 में। अर्थ रोटेशन, इन्फ्लुएंस विंड्स, इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारा जो साइंटिस्ट है, बहुत सारा मेट्रोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने काम किया। 1950 में मेट्रोलॉजी, ओके, हाई स्पीड कंप्यूटर डेवलप किया गया है। सॉल्व मैथमेटिकल इक्वेशन जिसके द बिहेवियर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, प्रिंसटन, न्यू जर्सी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे जो साइंटिस्ट और मेट्रोलॉजिस्ट उन्होंने काम किया है। मेट्रोलॉजी हेलो, ঠিক আছে তো, সুস্থ আছে? আচ্ছা, in 1960 फर्स्ट वेदर सैटेलाइट, ओके, तिरस-1 डेवलप्ड, लॉन्च हुआ है। स्पेस एज मेट्रोलॉजी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो थंडरस्टॉर्म यहाँ पर एरिस्टोटल थंड, ओके, थियोफ्रास्टस रिमेन्ड इन्फ्लुएंस इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है। ओके, उन्होंने क्या काम किया है। 1990s इवन मोर सोफिस्टिकेटेड, ओके, सैटेलाइट, ओके, सैटेलाइट डेवलपमेंट किया है रिसेंटली। उसके बाद देखिए, इससे पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वेरियस गैस प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ एयर नियर द अर्थ सरफेस। नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन देख सकते हैं आपको, 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन 21% टोटल वॉल्यूम में का। ओके, टोटल 100% का। other gases, okay, have here
Okay, nitrogen and oxygen fairly constant up to elevation about 80 km. Okay, nitrogen and oxygen. At the surface there is balance between destruction, output and production input of these gases. For example, nitrogen is removed from the atmosphere primarily by biological process that involve soil bacteria. It is returned to the atmosphere mainly through the decaying plant and animals matter. Oxygen on the other hand, its removal from the atmosphere when organic matter decays और oxygen combines with other. यहाँ देख सकते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर व्यू फ्रॉम स्पेस से अगर देखा जाए तो इस तरह आप देखेंगे अर्थ एटमॉस्फेयर व्यू. The thin blue area near the horizon show shallowness of the earth atmosphere. यहाँ पर देखिए ब्लू शेप, ठीक है. और यहाँ पर देख सकते हैं गैस परसेंटेज. ओके, गैस सिंबल. ओके, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन ppm. ठीक है. देखिए गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड जेनॉन. ठीक है. इनको देख सकते हैं परसेंटेज किसका सबसे ज़्यादा. 78 नाइट्रोजन, तो इसको ऑक्सीजन, इसको आर्गन. यहाँ पर तो अब दो ठीक कर देंगे. नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन उसका बाद कौन होगा. आर्गन होगा 0.93. नियॉन, उसके बाद हीलियम, उसके बाद हाइड्रोजन, उसका बाद जेनॉन. ओके, हाइड्रोजन के लास्ट में जेनॉन. ठीक है. ये आर्गन अब याद रखिए, आर्गन, नियॉन, उसके बाद हीलियम, आर्गन, नियॉन, हीलियम. ओके, हाइड्रोजन, उसके बाद जेनॉन. तो परसेंटेज देख सकते हैं. वाटर वेपर सिंबल H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ सिंबल, मीथेन CH4, आप जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3. ओके. और परसेंट 0 to 4, 0.3037, 0.00 यहाँ पर परसेंट बाई वॉल्यूम, 0 to 4 यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं. The parts per million 368 ऑक्सीजन, 1.7 आर्गन. तो देख सकते हैं, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. लास्ट फॉर CO2 368 पार्ट्स. Parts per million means that our out of every million air molecule, 368 of are CO2 molecules. Stratosphere has altitudes 11 to 50 km or about 5 to 12 ppm. ये पर इस स्टेप देख सकते हैं. द अर्थ एटमॉस्फेयर रिच मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. ओके, मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस एटमॉस्फेयर यहाँ पर. ओके, ठीक है. मेनी गैसेस फॉर्म करता है यहाँ पर. विद द क्लाउड्स ऑफ कंडेंस्ड एंड वेपर ऑफ आइस क्रिस्टल. हियर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द ओशन सरफेस. वाटर इवेपोरेट्स हो रहा है ओशन सरफेस से. ठीक है. तो rising air currents and then transform the invisible water vapor, okay, into many billions of tiny liquids, droplets that appears as puffy cumulus, clouds. If the rising air in the cloud should extend to greater heights where air temperatures are quite low, some of the liquid droplets would freeze, okay, into minute आइस क्रिस्टल. इस डायग्राम में देख सकते हैं ER के साथ साथ CO2 कंसंट्रेशन हो रहा है. ओके, पार्ट्स पर मिलियन PV. मेजरमेंट अब यहाँ पर बढ़ रहा है. देखिए ER के साथ साथ CO2 कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. मेजरमेंट ऑफ CO2 पार्ट्स पर मिलियन मिलियन. ओके, एट मोना लोहा ऑब्जर्वेटरी मोनल हवाई में जो है स्टेशन वहाँ पर. ओके, तो हायर रीडिंग अकर इन विंटर. हायर रीडिंग किस टाइम में ना, विंटर में है CO2. ओके, विंटर में. व्हेन पार्ट्स पर
when plants die होते हैं and release CO2 release होते हैं to atmosphere lower and region occurs in summer when more abundant vegetation absorbs CO2 atmosphere from the atmosphere. ठीक है, तो विंटर में ज़्यादा होते हैं एटमोसफियर CO2. ओके, these gases including CO2 occupy only a small fraction of a percent. The small fraction of percent in the volume of air near the surface. They are referred to collectively as trace gases. At the surface of ozone, it is primarily ingredient of photochemical smoke, which irritates the eyes and throat and damage vegetation. But the majority of atmospheric ozone, 97%, is found in the upper atmosphere, in the stratosphere, where it is formed naturally as oxygen atoms combine with oxygen molecules. Oxygen atoms combine with oxygen molecules. Here concentration of ozone layer concentration of ozone average less than 0.002% volume. This small quantity of is important, however, because it shields plants and animals and humans from the sun's harmful ultraviolet rays. It is ironic that ozone, which damages plant life and polluted environment, provides a natural protective shield in the upper atmosphere so that plants on the surface may survive. We will see chapter 12 of the CFC enter the stratosphere ultraviolet. Originally the word smog meant combining of smoke and fog. Today, however, the word usually refers to the smoke that forms in large cities such as Los Angeles, California, because this type of smoke forms when chemical reactions take place present sunlight. Called smoke. यहाँ पर देख सकते हैं ओके इरप्टिंग वोल्कानो देख सकते हैं यहाँ पर ओके volcano can send tons of particles into the atmosphere along with vast amount of water vapor. Okay, carbon dioxide, amounts of water vapor, carbon dioxide and sulfur oxide. Water vapor, sulfur dioxide and CO2. Okay, all are have here. Okay, the impurities from the both natural and human sources also present in the atmosphere. Wind picks up dust and soils from the earth's surface and carries it aloft. Some saltwater drops from the ocean waves and swept into the air. These drops leaves microscopic salt particles suspended in the atmosphere. Smoke from the forest fires and often carried high above the earth. The volcanoes spew many tons of fine ash particles and gases into the air. Collectively, the tiny solid or liquid suspended particles of volcano of various composition are called aerosol. The tiny solid and liquid suspended particles, liquid and solid particles composition. Okay, aerosol called. Some natural impurities some found in the atmosphere are quite beneficial. Small floating particles. Some natural impurities found in the atmosphere are quite beneficial. Small floating particles, for instance, act as surfaces on which water vapor condenses to form clouds. However, the most human-made impurities and some natural ones that the main nuisance as well as health hazard. These are called pollutants. For example, automobile engines emit copious amount of nitrogen oxide, carbon monoxide,
and hydrocarbons. In sunlight, nitrogen oxide reacts with hydrocarbon. In sunlight के टाइम नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्ट करते हैं विद किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ and other gases के साथ, to produce ओजोन कार्बन. ओके, ठीक है. तो इन सनलाइट के नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन. ओके, ओजोन और कार्बन के प्रोड्यूस करते हैं. Carbon monoxide. Okay, ozone and carbon is a major pollutant of the city air. Carbon monoxide and ozone. Colorless and odorless, the poisonous gas from during the incomplete combustion of carbon-containing fuel. Hence, over 75% of the carbon monoxide in urban areas. 75% of carbon monoxide in urban areas comes from the road vehicle. Important है, 75% coming from urban areas. Carbon come from road vehicles आते हैं. The burning of sulfur-containing fuels such as coal, oil releases the colorless gas sulfur dioxide (SO2) into the air. When the atmosphere is sufficiently moist, the SO2 may transform into the tiny dilute drops of the sulfuric acid. SO2 may transform into tiny dilute drops of sulfuric acid. Rain containing sulfuric acid corrodes metals and painted surface and turns freshwater lakes acidic. Okay. Rain containing sulfuric and acid corrodes metals and painted surfaces and turns freshwater lakes acidic. Sulfuric acid contain rainwater. Okay, freshwater lakes acidic. Acid rain, thoroughly discussed in chapter 12, in major environmental problem, especially downwind from a major industrial areas. In addition, high concentration of SO2 produce serious respiratory problem in humans such as bronchitis, emphysema, and have an adverse effect on plant life. More information on these pollutants given in chapter 12. The early atmosphere. The atmosphere that originally surrounded the Earth was probably much different from the air we breathe today. The Earth's first atmosphere, some 4.6 billion years ago, was most likely hydrogen and helium, the most abundant gases found in the universe, as well as hydrogen compounds such as methane, ammonia. Most scientists feel that this early atmosphere escaped into space from the Earth's hot surface. The second more dense atmosphere, however, gradually developed the Earth as gases from molten rock. Process of photosynthesis in plants in the present sunlight combine carbon dioxide and water to produce oxygen. ठीक है, combine carbon dioxide and water to produce oxygen, sunlight. ठीक है, present. And hence, after plant evolved, the atmospheric oxygen content increases most rapidly, probably reaching its present composition about several hundred of millions years ago. Okay, the weight. Okay, the air molecules weight. In fact, air is surprisingly heavy. Weight of all air amounts of the Earth is staggering 5,600 trillion tons. Air around Earth weight. The weight of air molecules act force upon the Earth. Okay, the amount of force exerted. The amount of force exerted over the area surface called atmosphere, atmospheric pressure, or simply atmospheric pressure. The pressure at any level
in the atmosphere may be measured in terms of the total mass of the earth. Any point as we climb in elevation fewer air molecules above us. Hence यहाँ पर देख सकते हैं the water vapor, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा. Before going to next several sections, view some of the important concepts about for present for air. So for the Earth's atmosphere, mixture of the gases and volume of the surface, nitrogen copious with 78%, oxygen 21%, water vapor condense liquid water droplets into liquid water droplets and transform into liquid and crystals. ठीक है. It is now believed that Earth's soil may have originated in numerous collisions and small meteors or the distinguished comets when the Earth was very young. ठीक है. The weight of object including यार यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा. ठीक है, देख सकते हैं. बैरोमीटर क्या है? एयर प्रेशर मेजर्ड. ओके, बैरोमीटर इसके बारे में लिखा है. डायग्राम देखिए. Both air pressure and air density increases with increasing altitude. Air pressure and air density increasing with altitude. ठीक, इंक्रीजिंग हो रहा है और अल्टीट्यूड के साथ साथ बढ़ रहा है. 0, 100, 200, 500. यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ज़्यादा था, हाई था यहाँ पर, बट यहाँ पर बहुत एयर मॉलिक्यूल्स कम हो गया. एयर डेंसिटी यहाँ पर देख सकते हैं कम था, लेकिन ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है. ठीक है, तो अल्टीट्यूड के साथ साथ यहाँ पर बढ़ रहा है, एयर प्रेशर बढ़ रहा है. ठीक है, यहाँ पर लिखा है एयर प्रेशर एंड एयर डेंसिटी. एयर डेंसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन एयर प्रेशर बढ़ जाएगा उस अल्टीट्यूड के साथ साथ. एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस होगा रैपिडली. यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो प्रेशर यहाँ पर है, प्रेशर ऑल्टीट्यूड. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस रैपिडली विद हाइट. ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा रैपिडली विद हाइट के साथ साथ. ठीक है, प्रेशर देखिए हाइट के साथ साथ डिक्रीज हो गया. ठीक है, यहाँ पर बढ़ रहा है. ओके, रैपिडली विद हाइट climbing to the altitude 5.5 kilometer where the pressure is 500 MB. ठीक है, 5.5 किलोमीटर है, 500 MB. यहाँ पर देख सकते हैं 5.5 500 MB. ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं. सो यहाँ पर आपने देखा एयर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ऑल्टीट्यूड के साथ साथ. और यहाँ पर देखा एयर प्रेशर कैसे, एयर डेंसिटी कैसे डिक्रीज हो रहा है ऊपर में, लेकिन एयर प्रेशर बढ़ रहा है. ठीक है, लोअर में. ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है, एट द सी लेवल द एवरेज स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 13.25 MB equals to 13.25 PA HPA और 29.92 in Hg. ओके, याद रख सकता है. ठीक है, with the sea level pressure 1,000 MB we can see 1.6 altitude of the 5.5 किलोमीटर. ओके, यहाँ पर आपने देखा. ठीक है, माउंट एवरेस्ट 29,000 फीट, एयर प्रेशर वुड बी बिलो 300 MB. द समिट इज अबाउट 70%. Even the layers of the atmosphere is related to average profile of the air temperature above the earth's surface. Okay, illustrate किया गया है. देखिए, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है. इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ रहा है. स्ट्रेटोस्फियर के बाद
और कम हो जाएगा ट्रोपोस्फियर मेसोस्फियर में, उसके बाद और मेसोपोज में थोड़ा रहेगा और उसके बाद बढ़ जाएगा और मेसोस्फियर में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है, प्लस 0 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, माइनस 60 डिग्री, यहाँ पर -100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर देख सकते हैं हाइट दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर में, ठीक है, और यहाँ पर भी ऑल्टीट्यूड दिया है। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर यहाँ पर ओजोन लेयर जो है 20 to 25 30 जो किलोमीटर ऑल्टीट्यूड के अंदर ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है। एंड यहाँ पर ट्रोपोस्फियर जो है, यहाँ पर भी अनस्टेबल एयर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत ही खतरनाक एरिया है ट्रोपोस्फियर, जहाँ पर एयरप्लेन भी नहीं चल पाते हैं, डिस्टर्बेंस देख पाते हैं वहाँ पर। ठीक है, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हमने देख लिया। अपने लैब स्टेट के बारे में देखेंगे। ठीक है, I reached due to primary fact to the fact in investigation further the chapter the sunlight warms earth the earth surface. Sunlight warms करते हैं earth surface को, and the surface, okay, surface को भी in terms warms the air above it, the rate at which air temperature decreases. Okay, when at the rate of the air temperature decrease, it is called lapse rate, the temperature lapse rate. Okay, average standard. Air temperature normally decrease with increasing. Air temperature normally decreasing with increasing height. Height के साथ साथ decrease हो जाएगा. Okay. Jet air gap 9 kilometer. The air temperature is outside -70 degree centigrade. ठीक है. तो देखा है यहाँ पर, यहाँ पर लेयर के बारे में, टेम्परेचर इन्वर्सन के बारे में लिखा है। On the other hand, other days the air on the other hand the other days the air temperature would the other days the air temperature would decreases more slowly, so its height and the lapse rate would be less. यहाँ पर occasionally the air temperature may actually increase with height. air temperature increase होता है height के साथ साथ increase, air temperature में भी increase होते हैं, तब हम inversion temperature inversion कहते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, ट्रोपोस्फियर क्या है, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इसके बारे में हमने देखा। तो ये आप नहीं डिस्कस करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, ये रेडियो साउंड विथ पैराशूट एंड बैलून। ओके, रेडियो साउंड, ओके, रेडियो साउंड यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर देखिए, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर, composition, green line, okay, electrical properties। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर रेड लाइन का टेम्परेचर, ये देखिए टेम्परेचर ये लाइन है। एंड कंपोजिशन जो है ग्रीन लाइन, देखिए ये कंपोजिशन जो है होमोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर, ये होमोस्फीयर का लेयर जो है 0 to 90 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर रहेगा, स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर रहेगा। थर्मोस्फियर जो रहेगा वो हेट्रोस्फियर में रहेगा। ठीक है, उसके ऊपर में आयनोस्फियर देखेंगे आप, एक्सोस्फियर, यहाँ पर ऊपर का तक आयनोस्फियर के ऊपर एक्सोस्फियर 500 किलोमीटर तक आयनोस्फियर होगा, उसके ऊपर एक्सोस्फियर होगा, तब देखा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आयनोस्फियर के बारे में देखिए, at night the higher region of the ionosphere, F region, यहाँ पर F region, higher region, okay, of the F region strongly reflects AM radio waves, strongly reflects AM radio waves, strongly reflect कर देंगे। okay, AM radio waves along with them to be sent over the great distance, set कर देंगे great distance during the day। The lower D strongly, lower layer D
D layer strongly absorb the weekend's aim, strongly absorb करेगा strongly देखिए strongly D layer strongly absorb करेगा weekend's aim radio waves को, preventing them from being picked up by the distant received received again. तो यहाँ पर देखा आपने, ठीक है, D layer, E layer, F layer, यहाँ पर 60 किलोमीटर D layer, उसके बाद E layer 120 and 180 किलोमीटर, ठीक है. उसके बाद द आयनोस्फीयर really a layer is not really a layer, electrified region it is, okay, within the upper atmosphere where fairly large concentration of ions and free electrons exist, okay. Ions and atoms and molecules that have lost, okay, one or more electrons, so atoms lose electrons, become positively charged when they cannot be absorbed. All the energy transferred to them into colliding energetic particles of the sun's energy. Okay, the lower regions of the ionosphere is usually about 60 kilometers, okay, on the earth from the above the earth's surface, ठीक है. आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, gradually disappear in radius, इसका नाम लिखा है, थोड़ा पढ़ सकते हैं आप, ठीक है. और यहाँ पर देखिए atmospheric pressure at any level represents the total mass of air above the level. The atmospheric pressure always decreases with increasing height. The atmosphere may be divided into layers according to particle profile of the temperature, the gases composition, electrical properties. Ozone of the Earth's surface is the main ingredient of the photochemical smoke, whereas originally the stratosphere protects life on Earth from the sun's harmful ultraviolet rays. ठीक है, ये पर आप लोग देख सकते हैं. उसके बाद वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में देखेंगे. वेदर वी टॉकिंग अबाउट द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइम के बारे में. वेदर, ओके, weather is always changing in comprised of the elements of air temperature, the degree of hotness or coldness of the air temperature, okay, our air pressure, the force of the air above the area, humidity, the measure of the amount of water vapor in the air, clouds, a visible mass of tiny water droplets and ice crystals that are above in the earth's surface. Precipitation, any form of water, either liquid or solid, that falls from the clouds, okay, reaches in the ground. Visibility, okay, the greatest distance one can see. Wind, the horizontal movement of air. ठीक है, यहाँ पर आपने देखा measure the weather elements, okay, the specific time of many years we would obtain greater weather of the climate of a particular region. Climate represents daily or regional weather events, okay, average and range of weather over a long period of time. ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर satellite view of the weather, a good view of the weather seen in the satellite. The photograph was obtained from the geostationary satellite situated above 36,000 kilometers of the earth, geostationary, okay, and the elevation of the satellite geostationary याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर 22,300 miles, ठीक है, और which allows it to remain positioned of the same spot so it can continuously monitor with taking place beneath it. The dotted lines running from the pole to pole on the satellite picture are called meridians. Since the zero prime meridian, okay, runs from the Greenwich through Greenwich, England, longitude at any place Earth is simply how far east or west in degrees it is from the prime meridian. North American is west of Great Britain. We are the most
The United States lies in 75 degree west and 125 degree west longitude. The dotted lines that parallel the equator are called parallels of latitudes. Latitudes at any place hover. The movements of oceans and continents are each explained in the widely acclaimed theory of plate tectonics, formerly called the theory of continental drift. Okay, 30 degree to and 50 degree, the region commonly referred to the middle latitudes. The Great Lakes, the middle latitude cyclonic storm system. Okay, hurricane, slightly smaller and more vigorous storm. Okay, is located over the Pacific near the latitude of 12 degrees north. Okay, longitudes 116 degree west. Okay, the tropical storm system with its swirling band, rotating clouds, and surface wind express 64 knots. Okay, is known as hurricane. The diameter of the hurricane is 800 kilometer, 500 mile. The tiny dot of the center is called eye. Storms all sizes. Okay, इसके बारे में देखिए. The largest organized cloud masses sprawling storm on such shows exclusive band cloud over 2000 km west of the Great Lakes, the middle latitude cyclone, extratropical cyclone, northern hemisphere. Okay, counterclockwise above the center, presently in the Minnesota. The satellite image. Okay, यहाँ पर देख सकते cloud patterns and storms of the Earth atmosphere. यहाँ पर दिखा है cloud patterns and storm. Okay, इसके बारे में देख सकते हैं. बहुत अच्छा पिक्चर है, सैटेलाइट से लिया गया है. तो यहाँ पर देखिए वेदर मैप. यहाँ पर कोरिलेट्स सैटेलाइट फिक्चर्स. स्टैंडर्ड ग्रीन एरिया टेम्परेचर precipitation and the numbers of map represent the temperatures. Okay, 0 degree. यहाँ पर देखते हैं कोल्ड फ्रंट के बारे में. देखिए कोल्ड फ्रंट अमेरिका का एरिया है. यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका. यहाँ पर कोल्ड फ्रंट रहते हैं. यहाँ पर वार्म फ्रंट होते हैं. यहाँ पर स्टेशनरी फ्रंट जो होते हैं, ये स्टेशनरी फ्रंट. उसके साथ साथ ऑक्लूडेड फ्रंट. यहाँ पर ऑक्लूडेड फ्रंट. अभी थंडरस्टॉर्म भी है. यहाँ पर थंडरस्टॉर्म है. तो ये थंडरस्टॉर्म भी है अंदर. ओके, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म है और लाइट रेन होते हैं. लाइट रेन होते हैं यहाँ पर. आगे सो विंड डायरेक्शन भी दिया हुआ है. विंड डायरेक्शन और विंड डायरेक्शन देख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं कुछ विंड डायरेक्शन के बारे में लिखा है. ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, यहाँ पर देखिए थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग अलोंग एंड अप्रोचिंग कोल्ड फ्रंट. थंडरस्टॉर्म, ये देखिए थंडरस्टॉर्म, कोल्ड फ्रंट, अप्रोचिंग कोल्ड फ्रंट. एंड आइस स्टॉर्म इन जनवरी 1998 कनाडा. क्रिप्ट कनाडा में देख सकते हैं आइस स्टॉर्म हुआ है. उसके बाद देखिए टॉर्नेडोज एनुअली इन्फ्लिक्ट वाइड स्प्रेड डैमेज करते हैं, कॉज ऑफ लॉस ऑफ मेनी लाइव्स करते हैं. यहाँ पर देख सकते हैं समवन हु वाज सेवरली इंजर्ड किल्ड होते हैं. यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है. एयरलाइन में क्रैश होते हैं. फ्लडिंग ड्यूरिंग द अप्रैल 1997 इंडिकेट्स ग्रैंड फॉर्क्स नॉर्थ डकोटा एज फ्लड वाटर एंड द रेड रिवर एक्सटेंडेड मच ऑफ द सिटी. यहाँ पर देख सकते हैं. यहाँ पर देख सकते हैं क्या देखिए एस्टिमेट दैट द lightning strikes the earth above 100 times every second. Consequently, it is the very common and sometimes deadly weather phenomena. NOAA weather radio transmitted
FM frequencies. The service provides continuously weather information, regions forecast as well as special weather advisors. Okay, 90% of the nation ये अपन देखे हैं. And देखिए, for many years staff trained professional the weather channel have provided weather information 24 hours a day on cable television. And finally National Oceanic and Atmospheric Administration is okay in cooperation with National Weather Service sponsors weather radio broadcast at the selected location of the United States. Okay, Meteorological Society approach. Meteorological Society American. Okay, said by National Weather Association to make their weather presentation. इसके बारे में देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर समरी दिया हुआ है क्या क्या हमने देखा है एटमॉस्फेयर में. तो उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं है ये. और ग्रेविटेशनल पूल होते हैं, इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है. मूवमेंट ऑफ द इंटेंसिफिकेशन ऑफ किनिंग. ओके, वेरीफाई वेदर इवेंट्स. ओके, डिस्कस द टर्म्स वेदर एलिमेंट्स. क्लाइमेट चेंज होते हैं. ओके, और द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट्स ऑल रिलेटेड फिनोमेना इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी. Okay, the term which originates back to the days of the Aristotle के बारे में ये रख सकते हैं. Finally we discuss some of the many ways on whether climate influence our life influence करते हैं. इसके बारे में हमने देखा है, तो अब देख लिया है पूरी की पूरी. So thank you friends, I think it will be help to you. First chapter